Good afternoon, everyone. How are you today? I hope all of you are doing very well and you are practicing, you are studying, paying attention to what you have been studying. And जो भी आप पढ़ रहे हैं, you are trying to practice more and more with the different structures. As you know, we've been doing different structures related to different sentences, and then you are also doing some exercises so that you understand those structures very well. So remember this point, if you do different exercises, if you listen to something, if you read something, and then if you talk about something, then definitely you get a lot of help in terms of understanding. So you have to keep on doing all these things, all these different things. I know you are practicing with your friends, you are practicing alone also. You are thinking about questions, you are thinking about sentences, you are doing all these things. And these things are very important in terms of making sure that whatever you are learning, you are using, because that's what you have to keep on doing. That is important. इसी से आपको ये समझ में आएगा जितने ज़्यादा sentences you are using, you are making, you are thinking, यही आपको confidence देंगे in terms of thinking, in terms of using, in terms of making different sentences. So whatever you can do in terms of practicing, do that. जो भी आप अपनी तरफ से practice कर सकते हैं वो practice करिए, right? And जैसे हर क्लास में I ask you that tell other people, tell your friends, ask them to watch these classes, right? To sit, you can call them, you can sit together, you can see these classes together. And because these are YouTube classes, so you can see, you can watch later on. आप लोग बाद में भी देख सकते हैं. So that is the benefit of YouTube classes. You can watch at any time whenever you are free. So keep on doing that. And then there are other lessons also जो हम पहले कर चुके हैं. So if you find something confusing, you can go back, you can watch that again, and you can practice there. There are exercises, you can practice those exercises on and on. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. अब कभी कभी थोड़ा सा ये वाली फीलिंग आ सकती है कि हम जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं अब वो हम कर चुके हैं, राइट? यू हैव डन वंस, यू हैव डन ट्वाइस, यू हैव डन थ्राइस. सो यू कुड फील समवट लाइक थोड़ा सा बोरिंग जैसा लग सकता है. बट रिमेंबर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग. आपको सिर्फ ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट पार्ट, वेदर इट इज बोरिंग और वेदर इट इज इंटरेस्टिंग. ऑफ कोर्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा तो ज्यादा यू विल पे अटेंशन, बट because you are practicing, so some exercises are there for your help. So you can repeat those exercises, you can make sentences, ask questions, on and on, on and on, on and on, right? जितना ज़्यादा ऐसे करते रहेंगे उतना ज़्यादा you will understand, you will be confident, and then you will see that you are taking your level to the next level. Okay, so यहाँ पे जो बात हो रही है, आपको जो मालूम है, आपको जो मालूम चल रहा है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है. ओके, एंड उस अंडरस्टैंडिंग के साथ जितनी भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको हेल्प करेगी कि जो अभी आपका लेवल है, प्रेजेंट लेवल, जो प्रेजेंट लेवल इन द सेंस, ये जो लेवल की बात होती है कि कितना आपको समझ में आता है, कितना आप उसको यूज कर पाते हैं, ये आपका लेवल है, राइट? सो इस लेवल को हमको इंक्रीज करना है, हमको नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है. तो उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए डेफिनेटली यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट तो होगी. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप डिफरेंट सिचुएशंस के सेंटेंसेस यूज करेंगे, उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी. सो जैसे आपने देखा कि हमने कुछ स्ट्रक्चर्स किए, उनकी सिचुएशंस भी समझी, ये भी समझा कि कहाँ पे यूज करते हैं, उनमें चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस भी इम्पोर्टेंट है. बिकॉज विदाउट दोज चेंजेस यू वुड नॉट बी एबल टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस, राइट करेक्ट सेंटेंसेस, स्पीक करेक्ट सेंटेंसेस. So those changes are very important. And after understanding, you have to make sure that you are using them continuously, because वो आपकी फिर हैबिट बन जाएगा. फिर देन वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो नहीं होगा. वो क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट? जो कि हमको बहुत कमी से यूज करना है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन कमी से यूज करना है. दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसलेशन. सो यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट. ओके, ट्रांसलेशन से हमको
कोशिश करनी है कि जितना कम ट्रांसलेशन हो, दैट इज हेल्पफुल। ओके, आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगा, एंड देन यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेटिंग। सो इन सारी सब चीज़ों से हम बच जाएंगे। ओके, सो ये सब चीज़ें आपको करते रहना है। ओके, एंड आज हम क्लास में जो हमने मॉडल वर्ब स्टार्ट किया था, हैज टू, हैव टू, जहाँ पे जो सिचुएशन थी जिसमें हम बोल रहे हैं दैट समथिंग इज इम्पोर्टेंट, समथिंग इज नेसेसरी, इस ये इसका सेंस निकालना है आपको इन सेंटेंसेस को जो आप नॉर्मली यूज करते हैं डे टू डे स्पीकिंग में, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, इनको यूज करना है हमको। सो फॉर दैट यू विल मेक such sentences okay with the help of modal verb has to and have to. नाउ अब यहाँ पे जो हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंट रिलेटेड सिचुएशन से सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए थे, एंड देन you also understood that how to use these different sentences, how to make positive sentences, negative sentences, questions with WH words. Okay, and apart from that, I shared with you some exercises also, that I asked you to complete those exercises, understand different sentences from those exercises, समझिए क्या सेंस निकल रहा है, क्या मीनिंग निकल रहा है, अगर क्वेश्चन है तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोगों से एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन भी शेयर किया था, एंड आई आस्क्ड यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन and also pay attention to different sentences that are coming in that conversation. ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने ये सारे सेंटेंसेस एंड एक्सरसाइज ट्राई कर ली होगी, एंड आई एम श्योर कि उसमें कुछ कंफ्यूजन या डिफिकल्टी नहीं आई होगी। फिर भी हम कुछ एग्जांपल्स उन एक्सरसाइजेस में से देख लेंगे, राइट, ताकि आपको वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए इफ देयर इज सम कंफ्यूजन कि वहाँ पे हमको उनको कैसे कंप्लीट करना था। ओके, चलिए, तो सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट, okay, so let's talk about the day. Today is the 16th day, and as you know, 16th जो डे है आज, उसमें हम 16th डे में आप अपनी पीछे की जर्नी को देखेंगे, राइट, जो आपके 15 डेज निकल चुके हैं। 15 डेज की आपने जो क्लासेस सुनी है, आपने जो क्लासेस देखी हैं, उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस है, उसमें आपकी क्या लर्निंग हुई है, आपको ये एनालाइज भी करते रहना। ओके, एनालाइज करते रहेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा दैट फ्रॉम द डे 1 टिल डे 15, टुडे इज डे 16, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, सीख ली हैं, अब हम उनको यूज़ कर रहे हैं, हम उनको यूज़ कर पा रहे हैं। सो वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, राइट, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दैट कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैं आप लोगों से पेज शेयर कर रहा हूँ, बट आई थिंक दैट इज नॉट लोडिंग। ओके, आई ट्राई वंस मोर, फिर से हम इसको लोड करते हैं। ओके, आई हैव shared the page, but it's saying it's being loaded, and I'm not sure whether it is loaded or not. Okay, there is some technical issue, I think, that I'm not able to share my page with you. Okay, at times this happens. Yeah, there is some technical issue, and because of that, I'm not able to share my page. Why is that happening? I don't have any clue. Okay, I don't have any idea about it. Okay, let share the page. Okay, एक दूसरा पेज ट्राई करके देखते हैं।
उससे आइडिया हो जाएगा हमको कि वेयर इज द प्रॉब्लम. Sometimes this happens due to network, but I think signals are very strong. All right. Today is problem in terms of sharing the screen. Okay, there is some sort of difficulty in terms of sharing the screen. So I will try that after some time. Meanwhile, let's continue talking about modal verb has to, have to. So in the last class, we completed the part related to present situation. Now, in present situation, we can make different sentences. What kind of different sentences? We can make present related sentences. But when we make present related sentences, do you take care of any change when you make present related sentences? Is there any change? Yes, there is a change related to subject. So you have to take care of your sentences related to subject. So what is that change? The change is very easy to understand that if you are talking about singular subject, what do we mean by a singular subject? So I will not repeat, what do we mean by a plural subject? Okay, so these things should be very clear. And अगर इज देयर एनी कंफ्यूजन तो आप प्रीवियस क्लासेस देखिए वहाँ पे काफी बार हमने डिस्कस करा है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं. एंड जो हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं वहाँ पे भी काफी टाइम ये मेंशन रहता है कि दीज आर द सिंगुलर सब्जेक्ट, ये कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ये कुछ प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इनके साथ ये चेंजेस हो. ओके, सो वो इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए. सो हम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. एज आई सेड दैट this is a modal verb, and in a situation like where you want to say something is important, something is necessary. For example, I have to go to market, so this is important for me, necessary for me. And थोड़ा सा यहाँ पे बिकॉज डेफिनेटली आप हिंदी में तो सोचेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, समझेंगे भी कि इसका क्या सेंस निकलता है इस सेंटेंस का. तो यहाँ पे इस सेंटेंस का क्या सेंस निकल रहा है? आई हैव टू गो टू मार्केट, सिंपल सेंस है, मुझे मार्केट जाना है. ओके, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, मुझे अपना वर्क कंप्लीट करना है. These are the senses of such kind of sentences. He has to complete his work. She has to complete her work. She has to talk to Rahul. I have to talk to Ravi. Any sort of sentences. यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है? मुझे ऐसा करना है. ओके, सिंपल सेंस. इन सारे सेंटेंसेस में, एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, कि कुछ ऐसे सेंस भी निकलेगा जहाँ पे ड्यूटी वाली बात होगी या ऑब्लिगेशन वाली बात. सो जब ड्यूटी या ऑब्लिगेशन वाली बात हो रही है तो उससे हम क्या समझ रहे हैं कि थोड़ा सा सेंटेंस के मीनिंग में चेंज हो जाएगा. राइट, आपने ऐसे सुना है ना. और हम यूज भी करते हैं कि हम कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ता है. सो जैसे आपने बोला पड़ता है, सो वहां पे कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ा सा फोर्स की बात हो रही है, ड्यूटी की बात हो रही है. सो सेंटेंसेस का ऐसे भी मीनिंग निकलेगा. ओके, सो दो तरह के सेंटेंसेस यहाँ पे. सेंटेंस तो सेम है लेकिन उसका सेंस दो तरह से निकल रहा है. व्हाट इज दैट सेंस? के आई हैव टू कंप्लीट, मुझे कंप्लीट करना है. सो नॉर्मली यू आर सेइंग आई हैव टू कंप्लीट माय वर्क. ओके, सो आई हैव टू कंप्लीट माय वर्क, आई हैव टू कंप्लीट माय वर्क. एंड इफ यू वांट टू से एज अ ड्यूटी कि दिस इज माय ड्यूटी, कि मुझे अपना वर्क कंप्लीट करना पड़ता है, सो अगेन यू विल यूज द सेम सेंटेंस. सेंटेंस तो आपका सेम ही रहेगा कि आई हैव टू कंप्लीट माय वर्क, बट देन देयर इज अ स्मॉल चेंज इन योर हिंदी सेंटेंस. ओके, क्योंकि डेफिनेटली आप हिंदी में दोनों तरह से सेंटेंसेस यूज करते हैं. आप नॉर्मली भी बोलते हैं और आप वो ड्यूटी वाला, ऑब्लिगेशन वाला सेंस भी देते हैं. सो जैसी भी सिचुएशन है, एज ए स्पीकर, एज ए राइटर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां पे क्या यूज करना चाह रहे हैं, कौन सा सेंस बताना चाह रहे हैं. ओके, सो जैसा भी सेंस होगा हम उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज कर लेंगे. ओके, सो यहाँ पे ओके,
के right. Okay, great. So now the screen is there in front of you. Today is our day 16, and on this day, जल्दी से हम जो समझ रहे हैं मॉडल वर्ब हैज टू हैव टू किन सिचुएशंस में यूज हो रहा है, सिंपल सा सेंस निकल रहा है। ओके, एंड जहां हमने लास्ट क्लास में सेंटेंसेस देखे थे प्रेजेंट सिचुएशन के, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव, वो सारे स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान में रखना है, एंड देन यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, ही हैज टू गो, ही डजंट हैव टू गो, I have to play, I don't have to play, do you have to play, does he have to go? What do you have to do? What do you have to do? Where do you have to go? All right. Why do you have to sit here? So you can think of different sentences. You can think of positive, you can think of negative, you can think of interrogative. Okay. So जितना ज़्यादा आप ऐसे try करके देखेंगे, you will get the help. Okay, you will get the help. किस तरह की help कि आपको समझ में आएगा कि हमको कैसे sentences use करना है। ये एग्जाम्पल्स हमने लास्ट क्लास में देखे थे, एंड आई आस्क्ड यू कि आप यहाँ पे दोनों आंसर्स ट्राई करेंगे, बिकॉज दीज आर यस नो क्वेश्चंस। आपको पता है कि ये यस नो क्वेश्चंस हैं। अब यस नो क्वेश्चंस हैं तो पॉसिबली दो तरह के आंसर आएंगे, यस भी होगा, नो भी होगा। सो फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स हम इसमें से लेंगे ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि क्या हमको यहाँ पे करना था। ओके, फॉर एग्जाम्पल, डज शी हैव टू बोरो मनी? Okay. Does she have to borrow money? Two possibilities. Yes, she has to borrow money. No, she doesn't have to borrow money. Now understand the meaning of the word borrow. Borrow का आपका meaning समझना है कि what is the meaning of borrow? When you take something from someone and then you promise that you will give that back. ओके जब आप ऐसे प्रॉमिस करते हैं ना, किसी से कुछ लिया, प्रॉमिस किया कि आपको वापस दे दूंगा, इट कुड बी मनी, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ पेन, बुक, एनीथिंग, उधार लें। So borrow. Does he have to borrow money? Yes, she has to. No, she doesn't have to because she has already money. Okay, she has already enough money. Okay, like this. Do we have to invite them? Yes, we have to invite them. No, we don't have to invite them. Do students have to take exam? Yes, students have to take exam. Okay, the students have to take exam. Also understand what is the meaning coming out from this question. Do students have to take exam? क्या students को exam देना है? Right? हाँ, students को exam देना है. Yes, students have to take exam. No, students don't have to take exam. अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है कि जब एग्जाम देने की बात होती है तो देने के सेंस में हम टेक यूज करते हैं। ओके, वी डू नॉट यूज गिव। सो जब आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, मतलब आप कोई भी पेपर लिख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर लिया है आपने और उनके आंसर्स लिख रहे हैं, सो देयर यू यूज टेक, नॉट गिव। क्योंकि आप किसी को एग्जाम दे नहीं रहे, आप तो खुद ले रहे हैं ना। सो उस सेंस में यस, स्टूडेंट्स हैव टू टेक एग्जाम। No, students don't have to take exam. Okay. Do I have to lend you money? Now understand what is the meaning of this question. Do I have to lend you money? What is the meaning of this question? समझ में आया कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या मुझे आपको पैसे लैंड। अब यहाँ पे जो लैंड वर्ड यूज हुआ है वो ऑपोजिट है बोरो का। बोरो इट मीन्स उधार देना, लैंड इट मीन्स, बोरो इट मीन्स उधार लेना, एंड लैंड इट मीन्स उधार देना। ओके, बोरो में हम किसी से उधार लेंगे एंड लैंड में आप किसी को उधार देंगे। ओके, सो डू आई हैव टू लैंड यू मनी, आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं क्या मुझे आपको पैसे लैंड करना है, उधार देना है। यस, यू हैव टू लैंड मी मनी। नो, यू डोंट हैव टू लैंड मी मनी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन योर आंसर विल कम। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे ये कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पे WH वर्ड के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपने ये क्वेश्चंस पढ़े, उनके आंसर्स पढ़े, आपने समझ लिया इनको कि क्या सेंस निकल रहा है। बिकॉज जब आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो वहां पे उसका सेंस भी एग्जैक्टली आपको समझना है कि दिस इज द मीनिंग कमिंग आउट ऑफ दिस क्वेश्चन और ऑफ दिस आंसर। सो व्हाट डज शी हैव टू डू? उसे क्या करना है? शी हैज टू हेल्प मदर इन द किचन। क्या करना है उसको? मदर की हेल्प करना है किचन। So also understand the meaning of the sentence. Now, what does it mean कि इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि this is the sense coming. So when you are asking question, the meaning should be clear in your head that I am asking this question.
When you are giving answer of any question, the meaning should be clear in your head कि I am answering this question और मेरा आंसर ये है, इसका सेंस ये निकलेगा. सो वो क्लियर होना चाहिए. इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमको बार बार हिंदी में सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखना है. वो तो आपको पता है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आंसर, बट दैट शुड बी क्लियर इन योर हेड दैट दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द मीनिंग ऑफ द आंसर. सो इट डजंट मीन कि आपको ये बार बार हिंदी में बोल के ट्राई कर, सिर्फ समझने के लिए दैट या दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द मीनिंग ऑफ द आंसर, यू हैव टू गिव इट अ ट्राई. अदरवाइज once you have understood, एक बार समझ में आ गया that this is the meaning, that's how we use has to have to in such situations when we want to talk something like this, when we want to ask something like this, then we use has to have to, then use it. Don't think in Hindi, directly use it in English. Okay. All right. Where do I have to sit? You are asking a question to someone. Okay. You have gone somewhere and you are asking this question. Where do I have to sit? Now you should know what is the meaning of this question. What am I asking? मैं क्या पूछ रहा हूँ? Where do I have to sit? So you are saying मुझे कहाँ बैठना है? Where do I have to sit? Okay. And you are getting the answer. You have to sit in that corner. Okay. So according to the question, answer is coming. You have to sit in this corner, you have to sit in that corner. So understand that this is the sense coming out of this answer. Okay, like that. How does he have to fill this form? So now understand what is the sense coming. Someone is asking question related to some sort of form. How does he have to fill this form? So the answer is coming. He has to fill this form in block letters, in capital letters. Okay, so you are getting the answer. He has to fill this form in block letters, in capital letters. Normally, we use this question a lot. How much do we have to pay? Now, how much do we have to pay? Understand the sense. What is the sense coming out? How much do we have to pay? You have to pay 500 rupees, or you don't have to pay anything. Okay, you don't have to pay anything. You have to pay 1,000 rupees. You have to pay anything, any amount. Okay, so here the point is that with these different sentences, you are understanding that this is the sense coming, and you are understanding that how to ask different questions, how to give answers. So यहाँ पे ये जो आप examples देख रहे हैं वो इसलिए कि आपको idea clear हो जाए, clarity आ जाए कि किस तरह के sentences use होना है, use होते हैं and हम use करेंगे. Okay. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट वाज रिलेटेड टू दिस कॉन्वर्सेशन. ये आपने कॉन्वर्सेशन पढ़ा, इसमें आपको समझ में आ गया दैट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. ओके, एंड हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग रिप्लाइड, क्या पूछा जा रहा है एंड क्या क्वेश्चन का रिप्लाई आ रहा है. ओके, व्हाट कोमल वांट्स टू आस्क, व्हाट काजल वांट्स टू आस्क, व्हाट कोमल इज रिप्लाइंग. ओके, आई एम वेरी बिजी टुडे, आई डोंट हैव अ पेन, आई हैव टू बाय अ पेन, मुझे पेन खरीदना है. Okay, then I have to meet my friend, we have to do some shopping. So something that she has to do. Okay, and then she is talking about it. Okay, she is telling that I have to do this, I have to do that. Okay, so she is giving that information. And then, okay, when will you be at home? Understand the question. What is the question? What is the meaning of this question? When will you be at home? What is the meaning of this question? Understand it. Okay, and you can take the help of Hindi so that you understand well. When will you be at home? आप घर पे कब होंगे? Okay, I think I will be at home by evening. By evening, शाम तक. Okay, शाम तक मैं घर पे हूँ. Okay, so whenever you read something, okay, always try to understand the sense, the sentence, the structure, right? What is the sense coming? What is the meaning coming out of that sentence? क्या meaning निकल रहा है? क्या sense निकल रहा है? Okay, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं. एंड अभी थोड़ी सी ऐसी भी हैबिट डालिए कि आप रीडिंग स्टार्ट करिए. ओके, एंड रीडिंग में आप जो स्टार्ट करेंगे, आप स्टोरी बुक से स्टार्ट करिए. ओके, छोटी स्टोरी बुक्स, स्मॉल शॉर्ट स्टोरीज, easy stories, not difficult ones, not lengthy ones, short stories. And you can find short stories in moral science books. Okay, जो moral science की बुक हैं उसमें काफी सारी ऐसी short stories रहती हैं. So you can take the help from those stories. Get into the habit of reading, because जब आप read करेंगे वहाँ पे आप encounter करेंगे different sentences. तो वहाँ पे आप
पढ़ेंगे समझेंगे एंड वो हेल्पफुल रहेगा that you are reading, you are understanding, and then you are getting the idea that okay, this sentence can be used this way. इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये सेंस निकल रहा है यहाँ पे सेंटेंस का. Okay? So you get lot of ideas when you read. So get into the habit of reading. धीरे धीरे से रीडिंग भी स्टार्ट करिए, शॉर्ट स्टोरीज स्टार्ट करिए. ओके, शॉर्ट ही यूज करना है एंड डिफिकल्ट वंस नहीं करना है, अभी इजी वंस रखना है. चलिए नेक्स्ट. आप लोगों से ये एक्सरसाइज शेयर करी थी जिसमें आपको ये डिफरेंट पार्ट्स कंप्लीट करने थे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेट. ओके, पॉजिटिव जो फॉर्म्स है इसमें सिंपली आप क्या यूज करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हैज टू हैव टू. सिंपल सी एक्सरसाइज है बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन. ओके, ओनली यू हैव टू टेक केयर ऑफ हैज टू हैव टू एंड देन यू हैव टू सी द सेंस. बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या सेंस निकल रहा है. ओके, आई हैव टू फीड माई डॉग. Okay, what is the sense coming out? I have to feed my dog. Acha, we have to wash the dishes. Okay, she has to go now. Okay, I have to wear a uniform. Okay, अब देखिए यहाँ पे ये जो आई हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म है ये सेंटेंस, इसके दो सेंस निकल सकते हैं. ओके, क्या सेंस निकल सकता है? हो सकता है कोई पर्सन ऐसे बोले कि मुझे यूनिफॉर्म पहनना है, एंड कोई पर्सन अपनी ड्यूटी भी बता सकता है कि रोज मेरी ड्यूटी है कि आई हैव टू वेयर यूनिफॉर्म, मुझे यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है बिकॉज दैट इज कंपल्सरी, वो कंपल्सरी है. सो दोनों तरह के सेंस निकलेंगे. अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में उस सेंस को यूज कर रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप. ओके, आपको बोलना है कि मुझे यूनिफॉर्म पहनना है या पहनना पड़ता है. सो इन बोथ वेज यू विल यूज सेम स्टेटमेंट. ओके, बट दिस शुड बी क्लियर इन योर हेड दैट व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू आस्क. ओके, आई हैव टू फीड माय डॉग. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट इन अ नॉर्मल वे, आई हैव टू फीड माय डॉग, मुझे अपने डॉग को खिलाना है. नॉर्मली यू आर सेइंग आई हैव टू फीड माय डॉग. बट इफ यू वांट टू यूज द सेम सेंटेंस एज ड्यूटी, दैट दिस इज माय ड्यूटी, देन आपका वो सेंटेंस का सेंस थोड़ा सा हिंदी में चेंज हो जाएगा कि मुझे अपने डॉग को खिलाना पड़ता है. दिस इज माई ड्यूटी, राइट? दिस इज माई ड्यूटी दैट आई हैव टू फीड माई डॉग. सो थोड़ा सा सेंटेंस के सेंस में चेंज हो जाएगा. किस में चेंज होगा? सिर्फ हिंदी में. इंग्लिश में तो सेंटेंस एज इट इज आ रहा है. ओके, आई हैव टू फीड माई डॉग. सो दिस शुड बी क्लियर इन योर हेड that what kind of sense you want to use. You want to use a normal sense, or you want to use a sense related to duty, related to obligation. Okay, because in Hindi ये जो हम दो सेंसेस की बात कर रहे हैं, बिकॉज हिंदी में दोनों तरह से सेंटेंसेस बोले जाते हैं. ओके, सो वहां पे फिर कंफ्यूजन नहीं. ओके, नाउ हाउ टू स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, सो यू विल स्पीक इन द सेम. ओके, सेम वे में आप वो यूज करें. नेगेटिव सेंटेंसेस में अगेन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको डजंट एंड डोंट यूज करना है. सो पीटर डजंट हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म. दोनों सेंस, पीटर को यूनिफॉर्म नहीं पहनना है या नहीं पहनना पड़ता है. ओके, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ऑन द सिचुएशन, व्हाट यू वांट टू से. दे डोंट हैव टू स्टडी फॉर अ टेस्ट. ओके, शीला डजंट हैव टू फीड हर डॉग. सो सिंपल, what you are doing, you are making these sentences negative forms using नेगेटिव सेंटेंसेस. एंड जब नेगेटिव सेंटेंसेस आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप अगेन सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे. एंड यू आर मेकिंग डजंट एंड डोंट. डजंट हैव टू, डोंट हैव टू. ओके, डजंट हैव टू, डोंट हैव टू. लियो डजंट हैव टू गो नाउ. ओके, लियो डजंट हैव टू गो नाउ. आई डोंट हैव टू हेल्प माय नेबर. मैरी एंड सू don't have to clean the chicken, not chicken, kitchen. Yeah, Mary and Sue don't have to clean the kitchen. Okay, I said chicken. Oh, that was funny. Mary and Sue don't have to clean the kitchen. Okay, उन्हें क्लीन नहीं करना है किचन. Okay, उनको नहीं क्लीन करना पड़ता है, उनकी ये ड्यूटी नहीं है. ओके, सो अगेन इट डिपेंड्स कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट वाज रिलेटेड टू क्वेश्चन. जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो अगेन वेरी सिंपल, जैसे हमने स्ट्रक्चर्स फॉलो करे हैं, वी विल यूज डज एंड डू according to the subject. So for example, does Peter have to feed the dog? Question, you are asking a question. Do Sue and John have to wear a uniform? Do I have to help mom? Do you have to study for a test? Does she have to eat fruit? Like
all these questions. Okay, so simply what you have to do, you have to make sentences, you have to ask questions using do and does as per the subject, singular, plural, subject. So simple exercise, okay, and simple sentences. The point is that is important that you have to take care of the sense of the sentences. What kind of sense is coming out? What kind of sense you want to give? ओके इसके लिए मैं आप लोगों से कुछ और एग्जांपल्स शेयर करता हूँ, थोड़ा सा और आइडिया क्लियर होगा. सी दीज एग्जांपल्स. देखिए इन एग्जांपल्स में प्रेजेंट सिचुएशन के एग्जांपल्स देख रहे हैं हम. ओके, इन एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि ड्यूटी वाला सेंस निकल रहा है. ओके, सो यहाँ पे मैरिया मारिया समटाइम्स मारिया समटाइम्स has to sweep the floor. Okay, Maria sometimes has to sweep the floor. मारिया को कभी कभी फ्लोर स्वीप साफ साफ करना पड़ता है. So this is her duty that sometimes she has to sweep the floor. कभी कभी उसको फ्लोर स्वीप करना पड़ता है. मारिया समटाइम्स हैज टू स्वीप द फ्लोर. मारिया को कभी कभी फ्लोर साफ करना है. कि अगेन दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह से सेंटेंस को यूज कर रहे हैं. आई ऑलवेज हैव टू मेक माई बेड. मुझे हमेशा अपना बेड बनाना है. या मुझे हमेशा अपना बेड बनाना पड़ता है. बेड बनाना इन द सेंस कि आपको उसको प्रॉपर करना है. राइट, मेक माई बेड इट मीन्स रेडी करना है. ओके, बिफोर स्लीपिंग you make your bed ready, right? You mm, keep your pillow properly, right? You keep your bed sheet properly, right? So you make your bed. Okay, so that is your duty. So you are saying I always have to make my bed. So ये जितने भी आप यहाँ पे sentences देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारा sentences ड्यूटी वाला सेंस दे रहे हैं. My brother usually has to feed the dog. Okay, उसको usually dog को feed करना पड़ता है. This is his duty. Camila and I usually have to wash the dishes. Wash the dishes, it means clean the dirty dishes. Okay, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें यूजुअली अक्सर हमको डिशेस साफ करनी होती. So in place of clean the dishes, you can also use do the dishes. Camila and I usually have to do the dishes. Nicola always has to water the plants. Okay, उसको क्या उसकी ड्यूटी है कि उसको हमेशा प्लांट्स को वाटर देना होता है, देना पड़ता है. This is his duty, Nicolas, right? So like these, we can make sentences in this way also. सो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो हिंदी है, राइट, जो हिंदी के सेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है. ओके, सो सेंटेंसेस सेम रहेंगे. एज ए स्पीकर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ सेंस यू वांट टू यूज. ओके, आई नेवर हैव टू टेक आउट द ट्रैश. आई नेवर हैव टू टेक आउट द ट्रैश. ट्रैश इट मीन्स गार्बेज. ओके, मुझे कभी भी गार्बेज नहीं निकालना पड़ता है. This is not my duty. I never have to take out the trash. I never have to throw mm, out the trash. Okay? Like that. So इन एग्जाम्पल्स से थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा कि जो ड्यूटी वाले सेंटेंसेस हैं वो किस तरह से हम यूज कर रहे हैं, किस तरह की ड्यूटी का सेंस निकल रहा है. ओके, एंड किस तरह का नॉर्मल सेंस निकल रहा है. अब ये जब आप सेंटेंसेस नॉर्मली यूज करेंगे, जो आपके डे टू डे कॉन्वर्सेशन में या डे टू डे लाइफ में जो चीजें आप नॉर्मली करते हैं, यूज करते हैं, ओके, जब आप थोड़ा सा उन पे ध्यान देंगे एंड यू विल मेक सेंटेंसेस, यू विल यूज सेंटेंसेस, then you will understand that what are those situations where you use duty obligation and what are those situations where you make simple without obligation, without duty sentences. Okay, understood. If there is any question, then you have comment section, you can ask question there. Okay, make sure that you need to make different sentences from your side also so that you understand well. Okay? उसके लिए आपको जितने ज़्यादा आप sentences use करेंगे, बनाएंगे, try करेंगे, उतना ज़्यादा understanding clear होगी.
एंड दिस इज द ओनली रीजन कि यहाँ पे जो हम एक्सरसाइज करते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस देखते हैं, सिचुएशंस देखते हैं, वो इसलिए कि क्लियर क्लियर हो जाए। ओके, तो जो भी स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, जो भी सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, वो समझ में आ जाए कि हमको कैसे यूज करना है। एंड देन यू हैव टू यूज वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग। ओके, सो जब भी आप ऐसे फ्री है, टाइम है, उसको यूज करके देखिए। ओके, चलिए, नाउ वी आर गोइंग बैक टू दिस पेज एंड जल्दी से अब हम ये देखेंगे कि जो हैज टू हैव टू की पास्ट सिचुएशन है। ओके, व्हेन यू यूज पास्ट सिचुएशन ऑफ हैज टू हैव टू, देन आर देयर एनी चेंजेस? क्या वहाँ पे कुछ चेंजेस हैं दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ? हाउ विल यू मेक sentences related to past situation? What will be structures that you will follow? Okay, so you will follow these structures for past situation. So in place of has to have to, simply you have to use had to. And when you use had to in your sentences, then you are giving the sense of past. जैसे आप had to use कर रहे हैं, because these are positive sentences, so आप इनमें had to use करेंगे, and had to use करके आप क्या sense दे रहे हैं? Positive sentences about past situation. Okay, so जहां पे आपने बोला I have to go, okay, present situation, now you are making it past. I had to go. Okay, simple. I had to go. So simply you have to use had to. And this is somewhat easier. थोड़ा सा easy है. क्यों easy है? Because यहाँ पे हमें singular plural subject का कोई ध्यान नहीं रखना है. With all subject, सारे subject के साथ, चाहे वो singular हो, plural हो, हम had to use करेंगे with verb first form. So simply आप क्या change कर रहे हैं? आप यहाँ पे past situation में has, have to को replace करके क्या use कर रहे हैं? Had to use कर रहे हैं, and with the help of had to you are giving that sense of past. He had to go, she had to buy a phone, talking about past. ऐसा करना था, ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था, right, like that. She had to buy a phone, we had to do the homework, you had to do this work, I had to play cricket. मुझे क्रिकेट खेलना था. I had to play cricket. Okay, so this is the sense coming from had to, past. All these are positive sentences. ये सारे sentences पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं. सो सिंपली आप क्या यूज कर रहे हैं? हैड टू यूज कर रहे हैं. सेंस क्या निकल रहा है? पास्ट करके कुछ करना था. ओके, ओके, सो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, कंफ्यूजन क्योंकि इजी भी है. सारे सब्जेक्ट के साथ हम हैड टू यूज कर रहे हैं, सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, एंड सारे सेंटेंसेस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं. सो आई हैड टू प्ले, आई हैड टू वॉच मूवी. अब पास्ट है तो वो पास्ट की सिचुएशन से रिलेटेड सेंटेंसेस आएंगे. यस्टरडे आई हैड टू वॉच मूवी. कल मुझे मूवी देखनी थी. यस्टरडे आई हैड टू कंप्लीट माय वर्क. कल मुझे अपना का वर्क कंप्लीट करना था. ओके, लाइक दैट. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट सिचुएशन, देन यू आर यूजिंग हैड टू. ओके, नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग फ्रॉम द सेंटेंस. ओके, किस तरह का मीनिंग सेंटेंस से निकल रहा है. नेक्स्ट, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट सिचुएशन. जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे पास्ट सिचुएशन के, सो देन यू विल फॉलो दिस स्ट्रक्चर. सिंपली हमको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, एंड द स्ट्रक्चर इज अगेन विथ ऑल सब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम. सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पार्ट. ओके, because it is past, because it is negative, that's why you will use didn't, and with didn't you will use have to. Okay, so with didn't you will use have to. So now here you will not use had to. So had to is being replaced, okay, with have to, and for negative we are using did. Okay, and what will be the sense? Sense will be past negative. She didn't have to buy the phone. Okay, what is the sense coming? She didn't have to buy the phone. उसको फोन नहीं खरीदना था. She didn't have to buy the phone. I didn't have to study for the test yesterday. I didn't have to study for the test yesterday. I didn't have to go to the market yesterday. Okay, so anything that you want to say कि आपको नहीं करना था, right? For that you are using didn't have to. And with all the subject,
singular, plural, you are using this term. Didn't have to. Okay, so easy structure hai. So now understand the sense, understand the examples, and with the help of examples, think of your own sentences. Okay, so if you had to do something yesterday, right, you didn't do, so then you can make some sentences related to that situation, related to yesterday. Okay, if you had to do something, okay, you can think of those sentences. For example, yesterday I had to meet Rahul. ओके मुझे राहुल से मिलना था yesterday I had to meet my friend. मुझे अपने फ्रेंड से मिलना था. Okay, like that. Yesterday I didn't have to waste my time. कल मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था. So think like these examples. Okay, and again, when you are thinking, first understand that what is the situation, what kind of sense will come out if you make sentences with this situation, maybe present, maybe past. Then after understanding the situation, then try to make different sentences, think of different sentences, think of situation, and then keep on making sentences. Okay, like that you will get the idea how to make different sentences. Okay, we didn't have to go there. All these examples are there to understand that what kind of sense is coming out. Okay, when we use didn't have to for past situation. They didn't have to attend the party. He didn't have to watch TV. Okay, so everywhere you are simply using didn't have to. ओके, सो यहाँ पे आप ये देखें कि जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में हम डजंट एंड डोंट का ध्यान रख रहे थे, दैट यूज डजंट हैव टू, यूज डोंट हैव टू, ऐसा यहाँ पे पास्ट सिचुएशन में नहीं है. विद ऑल सब्जेक्ट हम डिडंट हैव टू यूज कर रहे हैं. ओके, वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और वेदर सब्जेक्ट इज प्लूरल, यू आर यूजिंग डिडंट हैव. अंडरस्टैंडिंग. Now, your task is that to think of sentences, to make sentences, and now mix your sentences with present and past. So think of present related situation, think of past related situation, and then keep on making sentences, different sentences. Okay? So that's how you will make negative questions related to past situation. Okay, and then when you want to ask questions, जब आप questions पूछेंगे, so simply you will follow this structure. Okay, so keep this structure in head, read these examples, understand these examples, and then make your own examples. Think of your own examples. Think of some sentences, some questions. And then when you are making questions, when you are asking questions, then try to give the answer to those questions. So for example, did she have to clean the room? What is the meaning coming out of this question? So the moment you make this question with the help of did, you need to understand that this is past related question. Okay, question is being asked about the past. Did she have to clean the room? And accordingly, the answer will come. Did she have to clean the room? Yes, she had to clean the room. No, she didn't have to clean the room. So when you think of questions, you get the opportunity to make answers, yes, no answers, if you are asking a yes, no question. And when you use yes, no answers, then again, you are getting the opportunity to make sentences. So this is all about making sentences. More you make, more you understand, more you get the idea. Okay. So for example, did we have to pay the fine? Did I have to help you? Did Rita have to mop or sweep the floor? Did Rita have to clean the floor? क्या उसे clean करना था? Mop, it means with the help of cloth you clean. Okay, cloth की help से आप clean करते हैं. You also call it पोछा लगाना, साफ करना. Sweep with the help of broom. ब्रूम की हेल्प से, झाड़ू की हेल्प से आप स्वीप करते हैं, क्लीन करते हैं. सो दैट वे, क्या रीटा को ऐसा करना था? डिड रीटा हैव टू स्वीप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर? डिड आई हैव टू हेल्प यू? क्या मुझे आपकी हेल्प करनी थी? ओके, सो when I make Hindi sentences, right, I make Hindi sentences so that you understand them very well, that this is the sense coming out. But remember that you don't have to do all these things all the time. Yes,
When you have some sort of difficulty in terms of understanding the question, sentence, situation, there you can think in Hindi, you can take the help from Hindi. Otherwise, you have to make sure that you are using limited Hindi, less Hindi, so that you don't get into the habit of translating different sentences. Okay, थोड़ा सा हमको उसको avoid करना है, बिकॉज यहाँ पे जब आपकी हैबिट हो जाएगी कि दैट यू आर डायरेक्टली थिंकिंग इन इंग्लिश, सो वहाँ पे आपका सेंटेंसेस का फ्लो, फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस एंड देन ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, राइट? बट फॉर दैट you need to make sure that you are doing it, okay? So again, these are the questions related to past situation. Okay, we are using past situation of has to, have to. Here there are some changes, small changes related to past situation. When you ask question, when you make negative sentences, positive sentences, take care of these changes, make a lot of sentences, and be comfortable with these structures. Okay, so this is all about getting comfortable with different structures, because यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे ये जो structures हैं, situations हैं, ये धीरे धीरे increase हो, एंड जब इंक्रीज हो रही हैं तो आपको थोड़ा सा इनको ध्यान में भी रखना है कि इस सिचुएशन में आई विल मेक दिस सेंटेंस, आई विल यूज दिस सेंटेंस, आई विल आस्क सेंटेंस लाइक दिस। ओके, सो यू आर आंसरिंग करेक्टली, क्योंकि आप करेक्टली पूछ रहे हैं, करेक्टली उसका आंसर दे रहे हैं। सो दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग दीज स्ट्रक्चर्स, अंडरस्टैंडिंग दी सिचुएशंस, ये सब इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड फिर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। Okay, so keep this point in hand. Okay, so these are yes no questions of past situation, and past situation के yes no questions के बाद हम WH word से भी questions बनाएंगे। Okay, and WH word से जब आप questions बनाएंगे, so we will follow the same structure of yes no question, बस यहाँ पे WH words will add. Okay, because that is the situation, that's how you will use according to the situation. So, for example, when did they have to come? Now, when did they have to come? What is the sense coming out of this question? Okay, what will be the reply of this question? How will you answer this question? Okay, give it a try. Okay, how did I have to fill this form? Okay, if you are asking this question to someone, how did I have to fill this form? What is the sense coming out from this question? What do you want to ask? And what kind of reply, okay, that person will give you? Okay. Where did she have to keep her bag? Okay, what is the sense of this question? What is the meaning of this question? And what will be the answer, possible answer of this question? Think that way, and then with the help of these examples, think of some other questions, कुछ दूसरे questions सोचिए. Okay, and when you make those questions, then try to give answer. Okay, understand the situation very well, understand the structures, different sentences, the way we need to use them. Okay, once you understand, once you use, right, then you become comfortable, and it's all about getting comfortable. It's all about being comfortable. ओके, सो आज हमने जो एक्सरसाइजेज हमको करनी थी, उनको थोड़ा सा हमने उनका हिंट ले लिया कि हमको कैसे कंप्लीट करनी थी। हमने थोड़ा सा ये भी समझ लिया कि ये जो ड्यूटी वाले, ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं, कैसे सेंटेंसेस हैं, क्या सेंस निकलता है। ओके, एंड देन राइट नाउ हमें यहाँ पे पास्ट सिचुएशन जो यूज हो रही है, हैज टू हैव टू की, मॉडल वर्ब हैज टू हैव टू की, जहाँ पे हम हैड टू यूज करना है, डिडंट हैव टू यूज कर रहे हैं, वहां पे हमने डिफरेंट सेंटेंसेस देखे, उनके स्ट्रक्चर्स देखे, सेंस देखा, व्हाट काइंड ऑफ सेंस इज कमिंग आउट फ्रॉम दीज सेंटेंसेस, क्या सेंस निकलना है, निकलता है। ओके, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स, नाउ it's your time to make different sentences, right? To think of different sentences. Okay. So यहाँ पे अब आपको try करना है different sentences, different questions. Okay. अब आपके पास दोनों situations हैं, present भी है, past भी है, आपको sense पता है, आपको situation पता है, किस situation में हमको use करना है, किस तरह के sentences आएंगे, questions आएंगे, try करके देखिए। ओके, ट्राई करिए डिफरेंट सेंटेंसेस, ट्राई करके देखिए किस तरह का सेंस आ रहा है, एंड ये देखिए कि क्या आपको एकदम से क्लिक हो रहा है वो,
ओके जो भी सेंटेंस हम यूज करना है, ओके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्या वो एकदम से क्लिक हो रहा है, इज इट कमिंग कंफर्टेबली, ओके एंड देन यूज अदर सेंटेंसेस आल्सो, यूज अदर सिचुएशंस आल्सो, दूसरी भी सिचुएशंस यूज करके देखिए, ओके सो लाइक दिस कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ओके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम फ्यूचर सिचुएशन, तो बिकॉज ऑलवेज देयर विल बी थ्री सिचुएशंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ओके सो अभी हमने प्रेजेंट देख लिया, पास्ट देखा है, नाउ विल सी हाउ टू मेक सेंटेंसेस related to future situation, what will be the sense, okay for that situation, okay ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आपको प्रैक्टिस करते रहना, ओके कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना है। जो हमारी पिछली क्लासेस हैं, टुडे वाज द 16th डे, आज हमारा 16th डे, तो अपनी जर्नी को एनालाइज करते रहिए कि ये जो आज 16th डे भी कंप्लीट हो गया, इन 16 डेज में हमारे लिए क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, हमारी क्या लर्निंग हुई है, एंड कितना कंफर्टेबल है, कितना कंफर्टेबल होने के बाद सिचुएशंस के हिसाब से हम ये सारे सेंटेंसेस यूज कर पा रहे हैं, आराम से यूज कर पा रहे हैं, डिफिकल्टी के साथ यूज कर पा रहे हैं, वो आपको एनालाइज करता रहना। डिफिकल्टी हो रही है यूज करने में, इट मीन्स प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं हो रही है, थोड़ा सा और टाइम देना है, ओके थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी है, और कोशिश करनी है। If everything is coming comfortably, then well done. Okay, it means practice properly हो रही है, then there is no problem. Okay, and अगर हो सकता है कि कुछ confusion आ रहा हो, question आ रहा हो, doubt आ रहा है, then you can ask in comment section. You have that help comment section. You can ask there your question, your doubt. Okay, and then we can discuss that part in the class. Okay, for that you have to keep on practicing. Okay, अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, ये नहीं सोचना है हमको कि दीज आर ओनली टॉपिक्स, टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं एंड वंडरफुल, ओके टॉपिक्स के साथ साथ आपको यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ओके करते रहना है आपको कंटिन्यूसली। And as you know, there are other classes also, right, running उन classes को भी अगर आपको करना है, वो classes अटेंड करिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको वो क्लासेस करना है, उनको बता दीजिए और उन क्लासेस के बारे में, दे विल अटेंड दोज क्लासेस, राइट सो स्प्रेड द मैसेज, मैसेज को स्प्रेड करिए, टेल अदर्स, टेल इफ देयर इज समवन who is in your family wants to study, right, wants to learn, tell that person, help that person, okay. So do it, okay, and we will meet in the next class, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। एंड क्या करना है आपको, जल्दी से बता दीजिए क्या करना है। प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, चलिए, ऑल राइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।